गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज केडी सर फ्रॉम KDCVAM चैनल। आज फिर से आप लोग के सामने एक वीडियो लेके आया हूँ इंडियन एविडेंस एक्ट का। अगर आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के सारे वीडियोस चाहिए तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उन लिंक को क्लिक कीजिए और आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, राइट। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन एंड इट्स रिलेवेंसी। इसके जो सेक्शन है 45 to 51। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन पहले मैंने सोचा कि इसका 2 टुकड़े करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये अगर कंटिन्यूस रहेगा तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा और आप लोगों को भी वो कंटिन्यूटी समझ पड़ेगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। एक बंदा मिस्टर ए आके जज के सामने खड़े रह के कहता है कि ये जो बी सामने खड़ा है उसने मेरे साथ फोर्जरी की है और उसने जो चेक पर साइन किया वो साइन मेरी नहीं है। अब जज को साइन का से वेरिफिकेशन भी करना है। अब वो लॉ पढ़े हैं कि सिग्नेचर वेरिफिकेशन का कोर्स किया है। एक बात ये हुई। दूसरा सी आता है और कहा कि सामने जो डी डॉक्टर जो है उन्होंने गलत दवाई देके मेरे पिताजी का खून कर दिया। अब ये जो दवाई का जो है वो चेक कहाँ से करना। अब लॉ पढ़े हुए जज को यहाँ भी प्रॉब्लम आएगा, राइट। तो ऐसे टाइम पे, ऐसे मौके पर जज एक्सपर्ट्स का व्यू एंड ओपिनियन लेते हैं। यस, एक्सपर्ट्स किसे कहते हैं? अ पर्सन हु इज एक्सपर्टाइज और हैविंग अ स्पेशलाइज्ड स्किल और नॉलेज इन अ पर्टिकुलर फील्ड, राइट। तो देन ही इज कॉल्ड एज एक्सपर्ट। अब वो एक्सपर्ट कोई भी नहीं हो सकता है। अगर वो कोई ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से है तो उनका जल्दी कंसिडर किया जाता है, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन एंड इट्स रेलेवेंसी। लेट्स स्टार्ट विद द introduction. As a general rule, the opinions of the third persons are irrelevant in evidence law. They form a part of res inter alios acta, which means that any act done between two persons does not harm or benefit others. ये सही है, बराबर। res inter alios acta ये कहता है कि जब कोई दो जन के बीच में तकरार है तो तीसरे बंदे की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तीसरा बंदा कोई भी तौर से कहीं भी रिलेट नहीं होता। तो ये नॉर्मल और जनरल रूल है। लेकिन सेक्शन 45 to 51 डील विद द केसेस व्हेन द ओपिनियंस ऑफ थर्ड पार्टीज बिकम रेलेवेंट। तो टुडे वी आर गोइंग टू सी दीज सेक्शंस वेयर द ओपिनियन ऑफ द थर्ड पार्टीज कम इनटू द पिक्चर। नेक्स्ट, section number 45. According to this section there are 5 situation, right। तो 45 इसलिए मैंने कहा था कि डेप्थ है। तो ये 5 situations है when the opinion of the third parties can become relevant. Let's see all 5 situation first, then we will discuss, right। 5 situation। सबसे पहला situation है foreign law। कभी कभी ऐसा होता है कि फॉरेन लॉ बहुत जरूरत है कि ये कंट्री में ये हुआ था, इसके वजह से इन्होंने ये किया है। अब वो सही है कि नहीं, तो we need to know the opinion or view of the experts. तो foreign law, many times there are foreign laws which come into question. Second is science. Science का तो आप पूछो ही मत, इतना आगे बढ़ रहा है, इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इतने मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं कि इतने सारे टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज आगे आ रहे हैं कि आज हमको हर चीज एक्सपर्टाइज के थ्रू हेल्पफुल रहता है, राइट। तो साइंस में ऑल द tests that are performed on the basis of scientifically established principle. arts का क्या है कि कभी कभी कोई जगह है, कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है और वहाँ झगड़ा होता है कि ये शहर ये इस रिलीजन को जाता है या इस रिलीजन का ये पार्ट है, राइट। अब तब एक्सपर्टाइज का व्यू और ओपिनियन लिया जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ है हैंड राइटिंग। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल कहा था फोर्जरी वाला केस, राइट। तब हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जो हैं वो उसका सही अपना व्यू और ओपिनियन दे सकते हैं, राइट। फिफ्थ है फिंगर इंप्रेशन। नाउ डेज फिंगर इंप्रेशन हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और द पार्ट ऑफ द ईच एंड एवरी वर्क। इवन कंपनी से लेके हर जगह पे फिंगर इंप्रेशन काफी मददगार रूप होती है, राइट। तो सिंस द फिंगरप्रिंट्स वेर फर्स्ट डेवलप्ड इन कोलकाता in 1897, the first fingerprints bureau of the world was first set up. Now since then there has been tremendous improvement in the science of finger impression in the world. Examples ले लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी 2 एग्जाम्पल दिए वही वैसे ही हैं। If the question of the court is that A was killed by a poison, not then the evidence was given by a specialist or expert of the symptoms will be relevant. If, right,
तो वो पॉइजन से मरे कि नहीं मरे, वो चीज़ अगर कब से पता है, कैसे पता चलेगा, कोई एक्सपर्ट अपना व्यू देंगे तब। दैट्स सेकंड एग्जांपल है कि if the question before the court is whether a certain document is written by A or not, then another document is produced before the court and is proved or admitted to be written by A, then the opinion of the experts or whether the two documents are written by the same person or not, right? A का जो पुराना डॉक्यूमेंट है वो लिया जाता है और ये जो है ये फैक्ट इन इश्यू है, तो इसके साथ कंपेयर किया जाता है। लेकिन ये कंपैरिजन का भी जो डिसीजन है तुरंत जज नहीं लेते हैं, पहले एक्सपर्ट्स का व्यू भी लेते हैं कि वेदर बोथ ऑफ देम आर सेम और नॉट, देन दे कंसिडर द ओपिनियन एंड गिव देयर जजमेंट, राइट? कैन एन एक्सपर्ट बी ट्राइड फॉर प्रिजुडिस? कभी ऐसा भी होता है, यस। ये एक्सपर्ट्स कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स कभी कभी अपना पावर का या अपना एक्सपर्टाइज का मिसयूज भी करते हैं, तब क्या होता है? कैन दे बी कन्विक्टेड और नॉट? दैट इज द क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज डिस्कस्ड इन द केस ऑफ प्रेम सागर मनोचा वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। दिस केस वाज इन रिलेशन टू द बैलिस्टिक एक्सपर्ट इन द जेसिका लाल मर्डर केस। इन दिस केस द डिफेंस सेड दैट देयर वर टू पर्सन्स, दो जन ने गोली मारी थी, राइट? और उससे उसका जेसिका लाल वाज किल्ड। अब बैलिस्टिक एक्सपर्ट सेड दैट द बुलेट्स हैव बीन फायर्ड बाय टू। अब देखो उन्होंने भी वही किया, बरोबर, जो डिफेंस में थे उनका साथ दिया इन्होंने, तो उन्होंने भी वही कहा कि यस देयर वर टू डिफरेंट बुलेट्स। अब लास्ट में जब एक्यूज को कन्विक्ट किया गया तो ये पता चला कि देयर वाज ओनली वन बुलेट, राइट? द गन और द बैलिस्टिक एक्सपर्ट वाज कन्विक्टेड एंड perjury, बट ऑन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट द एपेक्स कोर्ट quashed the order of the perjury, saying that the expert is not a witness, right? उनको कोई कन्विक्ट करने की जरूरत नहीं है, because we just consider or take his opinion not as a witness. When expert opinion is not consistent with an witness or eyewitness, right? अब दूसरी बात भी देखिए, यहाँ एक बाजू एक्सपर्ट अपना व्यू देते हैं, ओपिनियन देता है, एक बाजू एक आई विटनेस है, राइट? एंड आई से दैट द आई विटनेस इज कंसिडर्ड और इस ओपिनियन और इस विटनेस इज कंसिडर्ड मोर देन दैट ऑफ द एक्सपर्ट व्यू और ओपिनियन। अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट भी हो तो पहले किसका कंसिडर किया जाएगा? आई विटनेस का। तो हाउएवर इन प्रैक्टिस द वैल्यू ऑफ एन एक्सपर्ट ओपिनियन इज नॉट मोर देन द वैल्यू ऑफ आई विटनेस अकाउंट। In case the eyewitness account is inconsistent with that of expert opinion, direct evidence is to be given priority. That is important. In case the eyewitness account is totally contradictory to that of expert opinion, then the credibility of the eyewitness account is to be seen. If the eyewitness account is believed to be credible, then the eyewitness account is to be taken and conviction can be done on its basis, even though एक्सपर्ट का जो व्यू है वो कॉन्ट्राडिक्ट क्यों ना हो, अगेंस्ट क्यों ना हो। Therefore, the expert opinion is just an opinion for a court and can form its own opinion even if it is totally contradictory of the expert's opinion. So the courts have to give due regard to the expert's opinion, but they are not bound to it, right? मतलब कोई बाइंडिंग नहीं है। Scientific and expert evidence. This is just for your knowledge, right? Modern science has made a huge impact on the law of evidence in several cases such as blood stain, blood group, alcohol and breath test, tape recordings, automatic photographs, computers, identification of fibers including human hairs, arson investigation, truth drugs and lie detectors, fingerprints and footprints. Hypnotism science has helped improving the evidence and make it more reliable and thus help in finding the truth. Now, modern techniques, as I said all this, right? इसमें दो एग्जाम्पल केस लो ले लेते हैं। पहला वाला है शाहनवाज वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यहाँ पे बात हुई थी कि जो डेट ऑफ बर्थ जो है, राइट, थ्रू मार्कशीट और स्कूल सर्टिफिकेट विल नॉट होल्ड गुड, देन एट दैट टाइम मेडिकल एविडेंस एज टू डिटरमाइनिंग द एज इज टू बी टेकन ओनली इन द केस where prescribed method of ascertaining the age are not available. जहाँ हमारे पास सही प्रूफ नहीं है तब ये medical evidence for ascertaining age can be considered or taken, the opinion can be considered. Now brain mapping, ये जो टेक्निक है अभी आजकल बहुत चल रहा है, लेकिन फिर भी
कोर्ट इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती है, राइट. एडमिसिबिलिटी ऑफ सच टेस्ट डिपेंड्स ऑन द क्रेडिबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ दो टेस्ट. It still requires consideration to ascertain whether such test should be given a probability value or not. However, in the case of Ranjit Singh, Brahmajit Singh Sharma versus State of Maharashtra, the High Court as well as Supreme Court did not give reliance to such test, right. तो आज भी इतना से ज़्यादा कंसिडर में किया नहीं जाता है. अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 45A. यहाँ से हमारा शुरू होता है. अभी तक जो भी था सेक्शन 45 के बारे में हमने डिस्कस किया. अब सेक्शन 45A से लेके 51 तक. सेक्शन 45A of the Evidence Act says that the opinion of the examiner of electronic evidence as given in section 79A of the Information Technology Act 2000 is to be taken in cases when the court has to form an opinion about एनी इंफॉर्मेशन. कोई इंफॉर्मेशन कोई हार्ड डिस्क में है, सीडी ड्राइव में है, या तो फिर कोई ऐसे पेन ड्राइव जो है, और तब उनको ये चाहिए कि ये जो डेटा है ये डेटा इनका ही है, तब एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट. तो वेदर इट इज़ दी फैक्ट इन इश्यू वाला ही है, राइट, रिलेवेंट है कि नहीं, तब ये इनको IT एक्सपर्ट्स का मदद लिया जाता है. बट सेक्शन 45A will come into play only when the electronic evidence is produced duly complying with the terms of section 65B. Section 46. Section 46 of the Indian Evidence Act says that the facts which are not relevant as such but which can be used to support contradict the expert opinion will become relevant. Example ले लेते हैं. In case where the handwriting of a person is in question, but the court has to determine as if the accused has written a certain document or not, and the handwriting expert has already given his opinion and said that the document in the question is actually written by the accused. But in this case a letter proved, तब उस accused का एक दूसरा लेटर मिला और उस लेटर को कंपेयर करके जब देखा तो इट वॉज नॉट सो. तो ये कॉन्ट्राडिक्ट भी हो सकता है. तो सेक्शन 46 यही कहता है कि whether which are not relevant as such but which can be used to support or contradict the expert opinion will become relevant. तो ये जो evidence जो document दूसरा मिला that will become relevant, right. So even if it has got no connection with the case. Section 47. Section 47 of the Indian Evidence Act says that when the court has to ascertain whether a certain document is written or signed by a particular person or not, then the opinions of the persons who are acquainted with the handwriting of that person, right, as to whether the document in question is written or signed by that person or not will be relevant. According to this section, the person is said to be acquainted with the handwriting of another person if he has seen that person write or he has received documents from the person, or when in the regular course of business he receives the documents that are supposed to be written by that person have been habitually submitted by to him. Example ले लेते हैं. A is the secretary of B, the owner of the firm, और A रोज अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं हैंड रिटन फॉर्म में. तो ये जो रोज जो सबमिट करते हैं तो B को उनका हैंड राइटिंग से आदी हो जाते हैं, राइट. अब A के सामने एक केस चलता है, ट्रायल चलता है. अब तब B को बुलाया जाता है, and so that as B is to be acquainted with the writings of A in the daily course of business, B's opinion will be considered. So this is what the section 47 says, right. तब एक्सपर्ट से ज़्यादा B जो है रोज साथ में है, बिजनेस के तौर पे रोज उनका रिपोर्ट लेते हैं, रोज हैंड राइटिंग देखते हैं, तो ही गेट यूज्ड ऑफ इट, और उनको बहुत सही पता होगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है, फैक्ट इन इश्यू जो है, वो इनका ए से लिखा गया कि नहीं है, राइट. एग्जाम्पल है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस विनय चंद्र छोटालाल पार्थी. सेक्शन 47A. Section 47A talks about the opinion of the act as to electronic signature. अब देखिए वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट था, नॉर्मल पेपर शीट था, अब यहाँ पे आया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. जब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात आती है, then the evidence of any person and the opinion of certified authority who is issued the electronic certificate will be relevant. उनका ओपिनियन रेलेवेंट गिना जाएगा. 48. Section 48 of the Indian Evidence is the case whether a general custom or right exists or not, then the court can take the opinion of the people who are likely to know
about the existence of such customs or rights, right? तो there you know that in India the diversification is lots of, right? इतने सारे customs, इतने सारे rights, अलग अलग प्रांति और लोग रहते हैं, तो वहाँ customs भी ऐसे होंगे। तो जब कोई custom या right मैटर या सब्जेक्ट रहता है तब उसके रिलेटेड जो लोग हैं, जो उसके आदी हैं, जो उन लोग पहले से रहते हैं कम्युनिटी में, सबसे जो बुजुर्ग हैं, ऐसे जो जिनको ये कस्टम फॉलो कर चुके हैं, उनका ओपिनियन कोर्ट लेगी, राइट? तब उनका ओपिनियन सबसे पहले कंसिडर में किया जाएगा। तो सेक्शन 13 relates the fact relevant when right or custom is in question. It says three aspects. One, a transaction which creates the custom or modifies the custom. Particular instances when the customs are claimed. Opinion of dead people. Now, ये एक बहुत ध्यान रखना है कि जो ओपिनियन डेड पीपल का जो ओपिनियन है वो कंसिडर नहीं, इट शैल बी लिविंग पीपल, राइट? तो वो आके बोले कि यस हमारे वहाँ ऐसा ऐसा होता था और हो रहा है और अभी चल रहा है, तो ये कस्टम है, तो दैट इज द थिंग। इन केस ऑफ ए कस्टम विच इज रिलेटेड टू वन फैमिली ओनली, देन द सीनियर मेंबर ऑफ द फैमिली इज टू बी क्वेश्चनड। व्हेन इट इज मैटर ऑफ फैमिली कस्टम, राइट, फैमिली, अ पर्टिकुलर फैमिली के कस्टम है, तो तब क्या करेंगे, तो सीनियर मेंबर है उनका जो व्यू है, उनका ओपिनियन कंसिडर किया है। लेकिन वो जब कम्युनिटी की बात आती है तो कम्युनिटी में जो सबसे बुजुर्ग हैं या उनके रिलेटेड हैं, जो ये फॉलो कर चुके हैं, उनका जो व्यू और ओपिनियन है वो कंसिडर किया जाएगा। तो सेक्शन 32(4) एंड द सेक्शन 48 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद द जनरल कस्टम्स। सेक्शन 49, it speaks about the opinions of the usage tenets, etc. When relevant, it says that when the court has to form an opinion, has to, right, the usages and tenets of any body or man or family, the constitution and the government of any religious or charitable foundation, or the meaning of words or terms used in a particular district or the particular classes of people. अब हमको भी पता है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अलग अलग मीनिंग रखते हैं अलग अलग स्टेट या तो जगह पे हैं। तो ऐसा जब होता है तब वो जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उन लोगों का जो राय है या ओपिनियन है वो लिया जाता है, राइट? एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट? अगर मुंबई भाषा में अगर आप देखो तो खोखा बोले तो करोड़, राइट? 1 करोड़ या अमाउंट ऑफ लमसम अमाउंट ऑफ मनी। बट वही अगर आप सिंपल गुजरात में बोलोगे खोखा मतलब इट्स अ बॉक्स, राइट? और नॉर्मल हिंदी में खोखा मतलब एक बॉक्स हुआ। तो दीज आर द टर्म्स यूज्ड डिफरेंट प्लेसेस विद द डिफरेंट मीनिंग और विद द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, राइट? सो दिस इज कंसिडर्ड डिपेंड्स ऑन द what for what purpose it has been used, that word. Then the opinions of the person having special means of knowledge thereon are relevant fact. Section 50. Section 50 talks about the opinion on a relationship when relevant. Yes, this is about the relationship. ये दोनों के बीच में रिलेशन कैसा था, राइट? ये क्या है, तो उनके साथ जो रह चुके हैं, जैसे उनके साथ उनके रिलेटिव, उनके फ्रेंड्स, उनके क्लोज पीपल जो इनको जानते हैं, अगर उनका जो ओपिनियन या व्यूज है वो कंसिडर या तो वो रिलेवेंट किया जाएगा। तो दिस सेक्शन सेज दैट व्हेनेवर द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू रिलेशन बिटवीन टू पर्सन्स, दैट एन ओपिनियन ऑफ एनी अदर पर्सन हु इज हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज regarding that by being a member of the family or by any other means is a relevant fact. However, it is provided that such opinion will not be sufficient in proving a marriage under the Indian Divorce Act 1869 and also in prosecution under 494, 495, 497 or 498 under the Indian Penal Code 1816. For example, if a question before the court is to determine whether A and B are married, then the fact that they are treated as and received as married couple, right? कुछ रिलेटिव्स के वहाँ एज ए मैरिड कपल गए होंगे, राइट? जब भी किसी की शादी होती है तो उन्हें क्लोज रिलेटिव्स उनके घर पे बुलाते हैं खाना खाने के लिए, तो दे तब ये जो है उनका जो ओपिनियन है वो कंसिडर किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स: एडॉप्शन इन द केस ऑफ बामी बेवा वर्सेस कृष्णा चंद्र स्वाइन, where there was a question of the validity of adoption, the evidence of the cousin of the adoptive father, राइट, द फैमिली प्रीस्ट। ये देखिए एक टाइम ऐसा था कि बहुत सारे जगह पे जब एडॉप्शन करते हैं कोई बच्चे का, राइट, तब जरूरी नहीं है कि वो जाके लीगली और रजिस्ट्रार के सामने जाके ये करेंगे, राइट? तब ऐसे केसेस में जो फैमिली प्रीस्ट है या तो फैमिली बार्बर है, ये अडोप्टिव इनको क्वेश्चन किया जाता है और उनका जो ओपिनियन है वो कंसिडर में किया जाता है, कंसिडरेशन में लिया जाता है।
The knowledge about property as family member. When there was a property dispute in a family and the plaintiff contended that the defendant's mother was actually his sister, then an 80 years old witness was produced who was brother-in-law of the defendant's mother. He had all the knowledge about family affairs and also attended the marriage of the defendant's mother. He was supposed to have special means of, and this was held in the case of Ban Singh versus Niranjan. Section 51. Section 51 of the Indian Evidence Act talks about the grounds of opinion when relevant. Right? It says that whenever the opinion of a living person, this is what the living person becomes relevant, then the grounds on which his opinion is based also becomes relevant. This is very important. जब भी आप कुछ ओपिनियन एक एक्सपर्ट या तो कोई पर्सन जब देते हैं तो उनको ये साबित करना होगा कि वो किस बेस पे ये कंक्लूजन पे आए थे, बराबर, इन्होंने किस तरह ये जो डिसीजन लिया है या तो अपना व्यू या ओपिनियन दिया है, right? So for example, if an expert is giving his opinion on something, then all those experiments performed by him because of which he has reached to that opinion also becomes relevant. So friends, I hope we have come to an end. Now it's a part of conclusion. So we saw that the opinions of third person are actually very weak evidence and the court has the liberty to decide whether to follow their opinion or not. As explained earlier, the opinion of third person are generally not applied. These are special circumstances, so we can say that the section 45 to 51 gives us exceptions in cases when the opinion of the third persons can be taken into consideration. Okay, so अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करो और शेयर करो, राइट? आई हैव बीन डूइंग लॉट्स ऑफ वीडियोस फॉर स्पेशली फॉर यू लॉ स्टूडेंट्स एंड द जुडिशरी एग्जाम स्टूडेंट्स, राइट? तो जस्ट शेयर करिए और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और जितना आप सब्सक्राइब करोगे और जितना आप कमेंट्स लिखोगे उतना हमको boosting मिलेगा, and we will keep on giving our service to you. Okay, have a nice day. Bye for the day. Let's meet in the next video.